kind of uh, the kind of support and coordination and and lead what you are offering to IIC is, I'm sure it is going to bear fruits in the near future for sure, and more and more students, aspirants would benefit out of it. So coming back to my topic of the day, I'm very happy to see some around 80, close to 80 participants today. We'll keep it very short and simple, and we are very clear that we have 1 hour in hand. So I would love to hear more from you than me um, just doing a lecture session. Moreover, we have virtual constraints, so I would encourage you to come in between, in case if you have any on the spot doubt, or you may store your queries for the end. Maybe we will have about 20 minutes in hand, close to 20 minutes before we wind up by 7:30. So we can have one-on-one interactions then. But what I would like you to have an overview about this field of negotiation is, I really want this to be understood very clearly, that this is just not about a particular course or a particular skill you are learning. Rather, this is something which is very much the part of our day-to-day life. And even every moment, every fraction of second, what we are spending time on, for each and every moves and activities and events and situations which we are the part of, we are basically somewhere, we are directly or indirectly, we are negotiating our priorities. And based on what we get out of that negotiation is what we carry with ourselves, and what we feel that somebody has taken it away from us. And we may feel bad, we may feel good, whatever outcomes generates, but then whatever is the outcome, but then we are very much in the process of negotiation from the very beginning of our early childhood, right from the school days till we are there. Deal making, there is a sense of offering something, there is a sense of accepting something, there is a sense of mutual gain, right? And the moment we have that sort of expectation, and that too from both the partners, both the parties, both the individuals, both the groups, both the companies, both the countries, negotiation is the right bridge, or a connecting point, or whatever you say, the linking point where from things become easier to sort it out, to reduce the conflict, to eliminate the conflict, to ensure there is a better give and take activities going on between the two. And when we talk about give and take, I use a term called value. At the end of the day, everything moves down to one single thing called value. What is the value I am getting out of it? What is the value he is getting out of this negotiation? Whatever is the value, value can be tangible, intangible, money, or a satisfaction, or recognition, or a sense of achievement. It could be both tangible, intangible nature when it comes to, when we talk about value. But at the end of the day, am I getting what I consider, so-called I consider as value out of this negotiation through outcomes? Whatever I get as a result, is it, am I considering it as valuable proposition? Can I go back home with smiling face, or do I have still grudges in my mind, partly believing that somewhere I could not negotiate well, somewhere I think I could have extracted more, somewhere I believe I left a lot on the negotiating table while negotiating with the counterpart. So if we have that sense of unfulfillment, a kind of incompleteness, even after doing negotiation, somewhere we feel that negotiation was not effective. Probably because of lack of negotiation skills, lack of experience, lack of exposure, lack or the poor timing of conducting the negotiation, or for that matter, the counterpart is far effective and experienced in negotiation. So therefore, you are not able to
you could not strike a deal. Okay. So that is the whole perspective. So today I'll keep it very specific in terms of giving you some of the nuggets of how negotiation functions, how negotiation works between individuals, between, because at the end of the day, it is about an individual game, individual mindset, as how one moves the steps back and forth and ensure that whatever is in the mind as objective or goal is fulfilled at the end of the negotiation. So whether it is between person or departments or companies or a nation, as I said, between the two countries, there are many negotiations going on at international level. Climate change is one. Brexit was recently one of them. Okay, North Korea US negotiation was going on some time back. China negotiation in between. So at an international level, we call it global negotiation. Such is the prevalence of negotiation right from the starting of the smallest unit of individual to the largest level of largest scale in terms of globalized negotiation. So a little bit about me. I have recently penned down an international book with my co-author, Professor Robert Hisrich. Those who have read entrepreneurship as a subject, they must have come across this international book by Robert Hisrich, Entrepreneurship. Most of the universities internationally are counting it as one of the textbooks in entrepreneurship. So I had the privilege to work with him, and we are coming up with this book. This was supposed to be released by this year, but then due to pandemic delay, it got postponed for next year, May 2022. So it is going to be published worldwide. So this is something I'm really looking forward to. So we have brought the two fields, one, negotiation and entrepreneurship, how they both blend together and offer more value in terms of knowledge and understanding about negotiation and how it can be effectively dealt in the field of startups and entrepreneurial ventures. So that something which I really wanted to share it with you. So in short, what is, in simple terms, I don't want to mention any definition or answer, but in simple terms, the goal is not to get a deal in negotiation, rather the goal is to get a good deal. So now the question is, what is good deal? Now, good deal can be interpreted or misinterpreted differently by different people, whosoever is in negotiation. So for me, what is good, the other person may not be seeing it in the same way, and for him or her, that negotiation, what is good, according to me, may not be the same. So say vice versa. So in negotiation, most of the time, individual prefers to look at their own understanding of what good deal is, and then they like to chase for that. Most of the time, they don't bother about what, according to the other person or other party, other counterpart, is good deal like. You may call it immaturity, or you may call it self-centered approach of just looking at one's own priority only. But then, by and large, most of the time, across the world, in companies, in organizations, in our personal life, professional life, most of the time, we go by our own interpretation of good deal for our own self, how it is going to benefit me, or the bigger question, so-called, what is in it for me? What is in it for me? मेरे लिए क्या है? मुझे क्या मिलेगा इससे? So if I am getting an answer to this question positively, I'm interested in negotiating. If the answer is not very motivating, I'm not going to go for it. Simple. It's human psychology. Even a child operates with this mechanism. अगर मुझे फायदा होगा, मुझे कुछ मिलेगा, तो I am going to do it, and there is nothing wrong in it. It's human psychology. That is how we are all wired like. We can't help it. So when everybody is thinking about their own vested interests or priorities, how are we going to ensure that we get the best out of it? Out of any negotiation or any sort of discord or a kind of conflict, right?
So that is where we require a tactical way of handling the dialogue or conversation between two individuals. ये जो tactical way है, dialogical process है, strategical approach है, strategic approach है, or keeping in view all the different dimensions which may affect or factors which may affect the negotiation between the two parties. इन सब चीजों को जब आप साथ में लेके उसकी प्रिपरेशन करते हुए जब उस कुर्सी पे जाके बैठते हो नेगोशिएट करने के लिए, तब जाके आपका नेगोशिएशन आपकी उम्मीद से ज्यादा आउटकम आपको दिलाता है by the time you finish of the negotiation with the counterpart. So what are those key principles, strategies, techniques, tactics, and don'ts, the particular mistakes one should know as a negotiator or would-be negotiator, is something which we are going to capture today. There are many things. In fact, I teach this as a course for 30 hours. So आप समझ सकते हो उसको 1 घंटे में, वो भी शायद 40 मिनट में समेटना, it's really a challenge, and that too virtually. It's all the more a challenging situation, but we will see how it works. Okay, so you can come in between. So quickly, पहले जो लोग बिल्कुल इसके बारे में नहीं जानते हैं और जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं और जो लोग बहुत अच्छा जानते हैं, सबके लिए है कि नॉर्मल एक नेगोशिएशन प्रोसेस, दिस इज हाउ इट मूव्स. नॉर्मल phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, phase 5, phase 6, phase 7. We begin with preparation. आने वाले किसी भी negotiation से पहले we go for an extensive preparation. जब मैं preparation की बात कर रहा हूँ, it doesn't mean just looking at what do I want. It is just one of the hundreds of questions. Beyond this particular question, what are my key strengths? What are my weaknesses? What are my opportunities? How am I going to move my cards? First card, in the sense, first offer, demands. Now these are different terms. Demands, offer is different. Concessions, demand क्या होगी मेरी, मैं offer क्या करूंगा उनको, concessions क्या दूंगा मैं उनको, मेरे पास क्या alternate option है, मतलब जिसको हम कहेंगे alternatives. मेरे पास कम से कम में मैं कितने में मैं ये नेगोशिएशन निपटा सकता हूं और क्लोज कर सकता हूं, मिनिमम, कम से कम. मतलब ये नौबत ना आए कि मुझे ये नेगोशिएशन फेल्ड नेगोशिएशन कहना पड़े, ये नौबत ना आए. इससे अच्छा कि कम से कम मैं इस नेगोशिएशन को ऐसे एंड करूं कि मुझे मिनिमम वैल्यू तो मैं लेके उठूं. उसको हम कहते हैं रिजर्वेशन वैल्यू, और वी आल्सो कॉल रिजर्वेशन प्राइस, राइट. जो मैंने इससे पहले अल्टरनेटिव की बात की थी, वो अल्टरनेटिव भी दो है. एक तो व्हाइल यू आर नेगोशिएटिंग देयर आर अल्टरनेटिव्स, मतलब जो सॉल्यूशन आपने बताया, जो आपने डिमांड की और वो डिमांड अगर फुलफिल नहीं हो रही है तो आपने एक और अल्टरनेटिव दिया, 2 दिया, 3 दिया. वो अगर if they are not able to accept it or they have their own demands, they are rejecting it, can we have more alternatives apart from 1 or 2? So the more you generate the alternatives, the better it is. और कब आप generate कर सकते हैं? You cannot instantly generate. You need to think, you need to prepare. That's the reason preparation is very important, right? And there is another term called BATNA, BATNA, best alternative to a negotiated agreement. ये वो अल्टरनेटिव है जो आप नेगोशिएशन से बाहर आपके पास क्या स्कोप है. अगर ये नेगोशिएशन फेल हो जाता है, ठीक है, अगर ये नेगोशिएशन फेल हो जाता है तो मेरे पास क्या है जो उतनी ही वैल्यू मुझे देती अगर ये नेगोशिएशन सक्सेसफुल होता, राइट. अगर ये नेगोशिएशन अगर सक्सेसफुल होता तो जो मुझे मिलता, जो भी whatever is my objective या expectation, achievement, maybe hike in salary, 20% hike in salary is what my objective for this negotiation. बॉस के साथ आपका negotiation हो रहा है, as an employee you are negotiating 20% hike की negotiation demand की आपने, back and forth conversations हुए, and finally negotiation fail हो गया because the manager is expecting 15% maximum and assuring that after seeing the further performance in the next 6 months, you may be considered for another 5% hike. But you are not okay with it, and then you feel like stepping back.
अगर आप स्टेप बैक करते हो तो दिस वुड बी टर्म्ड एज नेगोशिएशन एज फेल. Then what is left for you? Will you just go hanging your head back to your seat, और कुछ और कर सकते हैं आप? हो सकता है आप रिजाइन कर दें, हो सकता है आप you feel demotivated, you don't feel like coming again to office. So in order to avoid all of these bad results or aftermath of bad negotiation, can we have something equally valuable जो कि आपके उस नेगोशिएशन सक्सेस होने पे जो आपको वैल्यू फील होती है या वैल्यू अचीव करते, क्या वो वैसी ही वैल्यू, क्या आपके पास एक दूसरा ऑप्शन हो सकता है जो कि नेगोशिएशन का हिस्सा नहीं होना चाहिए, बाहर होना चाहिए? जैसे फॉर एग्जांपल, I before going for this 20% hike negotiation with my manager, I may have two already discussion with two of the companies जहां से मुझे already offer है और वो मुझे 30% तक की I'm expecting a jump in my overall compensation, 30% hike, 25 to 30%, yeah, 20 to 25%, whatever. So those are the proposal, almost 80% done. अभी मैंने उनको हाँ नहीं कहा, but let me explore this one first. So if these two options are available with me, मेरे लिए this can be one of the many options available in BATNA. BATNA में more than one options आप सोच के रखते हो, और हो सकता है 3 हो, 4 हो, 10 हो, 15 हो, लेकिन उन सब में से जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू जो आपको देगा, that particular solution or alternative will be called as best alternative to a negotiated agreement. अब इसकी बहुत जरूरत किसी भी नेगोशिएशन में बहुत जरूरी है. नेगोशिएशन में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बैठना मेरा क्या है. इसके दो कारण हैं. एक तो आप you will be very confident while negotiating. क्यों? क्योंकि आपको पता है I already have a safety net. अगर मैं ऊपर से गिरूंगा तो there is something to protect me. It's like in circus. सेफ्टी नेट नहीं है तो आप डर डर के नेगोशिएट करोगे. क्या होगा अगर नेगोशिएशन फेल हो गया तो क्या होगा? मेरे ये सारे एक्सपेक्टेशंस नहीं मीट होंगे, गोल्स लॉस हो जाएंगे, आई मे हैव दिस मेनी फाइनेंशियल लॉसेस और वगैरह वगैरह. काफी चीजें साइकोलॉजिकली यू वुड कन्वर्ट योरसेल्फ मोर एंड मोर वीकर in negotiating, और वो आपको आपके चेहरे पे दिखेगा. it will reflect in your body language, in your gestures, talk, everything. And सामने वाला अगर if he happens to be a better negotiator than you, he can easily in second he can make out you are not comfortable, you are not okay, you are not a good negotiator, and वहीं से things would be won't be in balance, things would get imbalanced, and then the power is going to dominate. Power means based on the influence whatever the counterpart is having, उस influence से आप you won't be that much effective in negotiating the way he or she is going to be effective. तो ये बहुत जरूरी है कि हम we consistently maintain the impact and influence over the counterparts moves and turns. इसके लिए जरूरी है कि ये बैठना हमारे माइंड में प्रिपरेशन का हिस्सा पहले से ही हम करके रखें, बैठना तैयार रहे हमारा. और दूसरा पॉइंट है बैठना के होने से ये है कि यू आर अ फ्री बर्ड. क्यों? क्योंकि जब आप नेगोशिएट कर रहे हो आपको कोई डर नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर ये फेल हो भी जाता है तो भी आपके पास इक्वली एट पार बराबर वैल्यू जनरेट करने वाला सोल्यूशन आपने पहले से सोच के रखा हुआ है, राइट? So say for example, my job, अगर ये if the manager is not giving me more than 15%, I may have different options. I can think one option. I can go for I may resign this company and join another company. One option. I can resign. I may resign this company and go for a small startup. मैं अपने खुद का कुछ startup शुरू करूँ या partnership में शुरू करूँ, co-founder बन जाऊँ. तीसरा, I may go for some higher degree, maybe बीटेक हूँ तो MBA कर लूँ, या abroad effort कर सकता हूँ तो abroad जाके 1 year MBA कर लूँ, executive MBA कर लूँ, या फिर कुछ extra CV में extra value addition लाने के लिए maybe I can get into social entrepreneurship and I can do something for the society or community, and I can come back after 2 years and go for some higher order, very senior level, director level position in some social ventures. There are many ways, right? There are multiple alternatives
एंड आउट ऑफ दोज अल्टरनेटिव्स उसमें से जो मेरा सबसे ज्यादा वैल्यू जनरेट करने वाला होगा, that will be counted as my BATNA. So BATNA, if it is ready and then I go to negotiation, my impact is going to be superb. My impact means my negotiation, my terms, my handling the situation, my demand, my offers, all those things will be very credible. सामने वाले को वो बहुत ही convincing लगेगा. अगर आप नहीं करके जाते हो तो you will be at receiving end. यानी वो जैसे जैसे it's like tail wagging the dog, not dog wagging the tail. आप समझ पा रहे हैं उस चीज को? वो वाली situation हो जाती है. So as part of preparation, it is a highly important thing. ये चीजें आगे आएंगी, मैं आपको जल्दी से वो टच करूंगा. तो phase 1 से phase 2 is building a rapport, a little bit of conversation and opening up. इसके लिए अक्सर क्या करते हैं नेगोशिएशन टेबल में जाने से पहले कई बार एक स्मार्ट नेगोशिएटर्स क्या करते हैं, मौका ढूंढते हैं कि कैसे मैं सामने वाले को इनफॉर्मल एक कन्वर्सेशन में एंगेज करूं, जैसे ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट करना या सेम जगह पे कॉफी के लिए बुला लेना, थोड़ा टाइम 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा इनफॉर्मल कन्वर्सेशन. तो उससे क्या होगा कि इवन इफ यू डोंट नो दैट पर्सन, यू गेट टू नो the same person in the next 10 15 20 minutes. वो जो एक warmth and affection जो create होता है initially, that actually helps a lot when you get into hard negotiation, जहां पर आप you are negotiator 1 and 2. So rapport building, relationship building is a key to any successful negotiation. जो ये नहीं करते हैं, directly जाके negotiate करने की कोशिश करते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है. रिलेशनशिप ओरिएंटेड कन्वर्सेशन, लॉजिकल मतलब एक लॉजिक के बदले दूसरा लॉजिक, दूसरे के बदले तीसरा लॉजिक, चौथा लॉजिक, पांचवा लॉजिक, ये काउंटर चलता रहेगा. एंड देयर कम्स अ पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड डेड लॉक. मींस मतलब जैसे डेड एंड है, रोड आप चले जा रहे हैं, सडनली आपको कोई रास्ता नहीं है, ना लेफ्ट है ना राइट है ना आगे है, तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है वापस आने के. इन द सेम वे वापस आना नेगोशिएशन का मतलब, नेगोशिएशन में मतलब फेल हो जाना. तो क्यों आप ऐसे, व्हाई डू यू वांट टू गेट इनटू दैट काइंड ऑफ डेडलॉक इफ यू कैन डू समथिंग अबाउट इट बिफोरहैंड. So try to establish a good rapport relationship so that there is a kind of scope of cooperation when required from the other party. क्योंकि आप याद रखिए, नेगोशिएशन कभी भी सक्सेसफुल आपके अकेले के बलबूते नहीं हो सकता, बल्कि सामने वाले का इन्वॉल्वमेंट, उनका सपोर्ट, उनका कंट्रीब्यूशन उतना ही जितना आप चाहते हैं, तभी जाके वो नेगोशिएशन सक्सेसफुली लैंड करेगा एक सक्सेसफुल आउटकम के लिए. अगर आप ये सोचते हैं कि आई एम ब्लेस्ड विद नेगोशिएशन स्किल्स एंड आई कैन इवन मूव द माउंटेन, ठीक है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा आपको आउटकम नहीं मिलेगा. सामने वाला, you cannot guess what sort of person he or she is, because there is always difference in human behavior and human behavior is quite unpredictable. So ये बहुत जरूरी है कि सामने वाले की साइकोलॉजी को समझना beforehand. अगर मौका मिले, अगर there are circumstances where it is difficult, right, लेकिन कुछ जगह पे जहां मौका मिल रहा है आपको थोड़ा एडवांस में अप्रोच करने का, तो make use of those opportunities. Phase 3, information gathering. You collect, and data collection is a very important thing. जैसे हम आप MBA में market research करते हो, इस तरह की. In the same way, data pertaining to all those related subjects, जो भी issue है negotiation का, जिस पे आप बात करने वाले हैं, उससे related सारे data advance में gather करना, ताकि आपको कहीं ना कहीं आप सामने वाले के सामने आप short of information ना रह जाए, और ये नौबत ना आए कि वो आपको educate कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं, ऐसी नौबत ना आए. तो अप टू डेट इंफॉर्मेशन फॉर रिलेटेड टू द नेगोशिएशन इश्यूज, जो भी आप इश्यू सॉल्व करना चाह रहे हैं उनकी मदद से आपके पास अपडेटेड इंफॉर्मेशन होना चाहिए टिल दैट मोमेंट, few minutes until that moment. Bidding is a situation that's a stage where you make offers, you make we call it trade off in negotiation language, यानी give and take. मतलब एक्सचेंज, आप कुछ दे, आपने डिमांड रखा, डिमांड सामने वाले को वो एक्सेप्ट नहीं है, तो आप फिर भी चाह रहे हैं कि उस डिमांड को अलग तरीके से मनवाएं
तो आप क्या करते हो कि ऑफर देते हो, अच्छा चलो आप इतना ऑफर आप ले सकते हैं, आप हमारी डिमांड को फुलफिल कर दीजिए। तो अगर वो ऑफर उनको अट्रैक्टिव लगता है तो हो सकता है डिमांड को पूरी तरह ना कर, भले ही ना करे, हो सकता है 75% तक एग्री कर जाए। And in the same way, the other person would also make certain offer to fulfill his demand from you. So ये जो back and forth का जो iterative process है exchange का, that process is in phase 5. And then you move to phase 6 at the stage where you close the deal, signing contract agreement, आप documented way में जाते हो, जहां पर आप terms and condition, वो सारी चीजें जो contract negotiation कहलाता है, जहां पर आप एग्रीमेंट बनाते हो और टर्म्स एंड कंडीशंस लिखते हो, आपस में शेयर करते हो, यू अपनी कंसर्न देते हो, एंड फाइनली यू एक्सेप्ट those terms, and you in principle you commit that we are going to abide by this till the end of this agreement. And that's how you move in terms of implementing those terms and conditions which you agreed out of this negotiation. So this is how you move in any sort of broad, these ये पूरी तरह से one size fits all kind of steps nahi hai, it may go with some variations, but broadly ये है। दूसरा important चीज जो आप सभी को ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी negotiation एक sitting में नहीं होता है। No negotiation works in one sitting with the negotiator, with the other negotiator. Minimum, several studies have confirmed that minimum आपको 4 से 5 sitting आपको negotiation table पे बैठना ही पड़ेगा। पहला negotiation, फर्स्ट नेगोशिएशन राउंड आपका हो सकता है बिल्कुल वार्म अप का स्टेज है, आप फिगर आउट कर रहे हो कि सामने वाला कैसा है या वो आपको फिगर आउट कर रहा है आप कैसे हो, व्हाट इज योर स्टाइल ऑफ नेगोशिएशन, और वो एंड हो जाता है। सेकंड नेगोशिएशन में आप हल्का फुल्का इश्यूज को हाईलाइट करते हो, एंड देन आपकी प्रायोरिटीज सामने वाले को समझाने की कोशिश करते हो। थर्ड में जाके कुछ मेजर इश्यूज निकल के आते हैं, उनको negotiate, then you exchange things, offer and all that, concession and all that. Fourth negotiation में आते आते you are very clear what is that I am looking for and what is in offer, and क्या मैं लूंगा नहीं लूंगा या रिजेक्ट करूंगा हाँ करूंगा, वो सारी चीजें बहुत crystal clear हो जाती है फोर्थ स्टेज पे। Same for the counterpart, and by fifth stage you are almost in a position to say yes on those demands, no to certain demands, give up certain things, you want to accept certain things, all those things finally come to the conclusion wherein you decide to go for a formal contract. कोई जरूरी नहीं है आप formal contract करें, it all depends upon what is the nature of this negotiation, like किस issue पे आप कर रहे हो। अगर आप कुछ business level पे कर रहे हो या product level पे कर रहे हो तो या उस तरह की चीजों में जा रहे हो तो obviously इन राइटिंग होना बहुत जरूरी है, बट एक पर्सनल लेवल पे फ्रेंड्स के साथ या फैमिली लेवल पे कर रहे हो कोई नेगोशिएशन, तो इट इज ऑलवेज बेटर, it is mutually agreeable kind of terms in the presence of other witnesses. तो कई बार ऐसे भी होता है, but then preferably it is to go for in writing agreement documentation process, जहां पर आप you don't have to be a learned person there to draft it, because there are experts available, legal experts available जो आपको ready-made terms condition आपको available कराते हैं। तो ये है, so please don't forget एक राउंड पे नहीं, multiple rounds 3 to 4 or 5 न्यूक्लियर एनबीटी जो न्यूक्लियर टेस्ट जो ट्रिटी जो अर्ली 2000 में जो ट्रिटी यूएस और इंडिया के बीच में एनबीटी साइन होने की बात चल रही थी, उसको 2 साल लगे with 11 to 12 different rounds between the foreign secretary of US and Indian foreign secretary के बीच में कम से कम 10 से 12 राउंड्स होने के बाद 2 साल लग गए, 2 से 2.5 साल लग गए। हमारे तरफ से मिस्टर श्याम शरण थे, आई स्टिल रिमेंबर हिज नेम। सो ये नेगोशिएशन होते होते फाइनली 12वें राउंड के बाद सर्टेन मिशन हमने नहीं माना, हमने उनकी बात नहीं मानी, बट देन हमने अपने शर्तों पे सर्टेन चीजें उनकी मानी, फिर फाइनली दे आल्सो एग्रीड with a kind of mutual agreement, कोई टर्म्स को एक्सचेंज हमने किया बराबर विदाउट लूजिंग आवर प्रायोरिटीज, और वो चीज हुई एंड फाइनली 2.5 साल के बाद वो नेगोशिएशन। ब्रेक्सिट आपने देखा कितने साल के बाद ये चीज, लेकिन ये इसलिए है क्योंकि ये इट इज एन इंटरनेशनल सब्जेक्ट, राइट। वही चीज आप इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हो, डिपार्टमेंट लेवल पे कर रहे हो, कंपनी विद इन द कंपनी कर रहे हो,
तो उसकी उसकी उसका जो टाइम पीरियड हो सकता है इतना ज्यादा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज है, व्हेन यू नेगोशिएट, यू डोंट जस्ट नेगोशिएट बाय लॉजिक। ये मैं बार बार सबको कहता हूँ कि अक्सर हमारे अंदर में ये है सोच कि नेगोशिएशन का मतलब मैं जितना आर्ग्यूमेंट करूंगा, जितना डेटा लेके आऊंगा, जितना लॉजिक लगाऊंगा, मैं आगे बढ़ सकता हूँ और मैं सोल्यूशन निकाल सकता हूँ। नहीं, आप ये भूल जाते हैं कि सामने वाला भी आपके जैसा या आपसे भी ज्यादा कॉम्पिटेंट होगा लॉजिक के मामले में। तो आप सिर्फ एक टग ऑफ वार जैसा सिचुएशन में ही आप आगे बढ़ते चले जाओगे और कंक्लूजन कुछ नहीं निकलने वाला। आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, रिसोर्स वेस्ट हो जाएगा, मैनओवर्स वेस्ट होंगे। तो जरूरी है कि आप लॉजिक को भी रखें, साथ में देयर इज समथिंग एल्स व्हिच इज कॉल्ड टैक्टिक्स और टेक्निक कह लो आप। टैक्टिक्स टेक्निक जैसा भी टर्म यूज करना चाहे, दोनों को पैरेलल चलाना पड़ेगा। अब टैक्टिक्स क्या है, टेक्निक क्या है, वो सामने आएगा, मैं आपको जल्दी शेयर करूंगा। तो लॉजिक जरूरी है, बट लॉजिक अलोन इज नॉट एनफ। अब ये जो आप देख रहे हो, दिस इज नथिंग बट द एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स, व्हिच इज कॉल्ड पावर। पावर जो चीज है वो इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष के पास है, ना कि आपको कोई देता है। अथॉरिटी आपको कोई देता है, पोजीशन, चेयर आपके डेजिग्नेशन से या कंपनी आपको देती है वो पोजीशन, तो आप यू आर ऑथराइज्ड टू टेक दैट। एज लॉन्ग एज यू आर इन दैट चेयर, यू आर ऑथराइज्ड। द मोमेंट यू आर off from the chair, you are no more authorized to take a particular decision. Whereas a person who carries certain power, out of these 4, out of these 5, maybe one of them, 2 of them, or all of them, if the person is able to execute it, is going to influence the other person for longer period of time, और उस तरह का influence जो है sustain ज्यादा करेगा। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, एपीजे, our late president, मिस्टर एपीजे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जब तक वो as a president of this country रहे, he was very much holding that authority of presidentship, right? Everybody respected, loved him. But the moment he was no more the president of India, आपने देखा होगा कि उनकी पॉपुलैरिटी उससे 100 times ज्यादा बढ़ गई, right? People started loving him all the more. Why? कहीं ना कहीं his power was very much influencing the minds of young, mid-age level people as well as older people. क्यों? क्योंकि he was holding certain power, maybe I can say expert power, because he was known as missile man, somebody who contributed immensely in the Indian defense system. Plus he had something called referent power. Referent का मतलब है कि role model. You want to be like him or like her, you aspire, like normally hum Bollywood or Hollywood stars ko we generally, that's the trend of youngsters, we look forward to these stars, but then the real stars are these people, those who have contributed to the nation development. So referent power, agar wo, if they carry that kind of referent power and you are ready to imbibe those attributes, is अगर आप उनसे प्रेरणा ले पा रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति आप पर एक पर्टिकुलर पावर एक्सरसाइज कर रहा है और वो पावर है रेफरेंट। अब नेगोशिएशन की बात करते हैं। नेगोशिएशन में जब इंटरेक्शन चल रहा है, तो इट इज वेरी नेसेसरी दैट यू होल्ड वन ऑफ दीज पावर्स विद इन यू, आइदर कोएर्सिव, रिवॉर्ड और रेफरेंट और लेजिटिमेट और एक्सपर्ट, या 2 of them, 3 of them, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटी। क्यों? क्योंकि सामने वाले को इन्फ्लुएंस करना बहुत जरूरी है, या तो आपके एक्सपर्ट पावर से, या रिवॉर्ड कैपेसिटी से, या रिवॉर्ड्स में भी इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट ऑफर्स। कोएर्सिव मैं कम कहूंगा, थोड़ा सा पनिशिंग इन द सेंस। कई बार क्या होता है नेगोशिएशन में, आप इन्फ्लुएंस करने के लिए आप क्या करते हो, वॉकआउट कर जाते हो। कन्वर्सेशन चल रहा है, आप निकल चल दिए, अब वो नेगोशिएटर देख रहा है आपकी तरफ कि ये क्या हुआ। तो ये सब टैक्टिक्स है to actually influence the counterpart, and उसको प्रेशर में लाने के लिए कि वो जल्दी रिजल्ट आपके फेवर में करे, या नेगोशिएशन का आउटकम आपके फेवर में करे। आप हो सकता है आप 2 फोन कॉल के लिए गए हो या वॉशरूम चले गए हो, एंड जब तक आप वो लौट के आते हैं, उतने देर में उनके माइंड में जो चेंजेस होंगे कि यार आई शुड चेंज द अप्रोच एंड आई शुड बी मोर कोऑपरेटिव, ये जो एक चेंज इन माइंडसेट होगा, उतनी देर में वो आपके फेवर में जाएगा।
ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है कोएर्सिव का. लेजिटिमेट इज नथिंग बट द अथॉरिटी. अगर आप इफ यू आर होल्डिंग अ हायर पोजीशन देन द अदर पार्टी, जैसे वो एचआर मैनेजर है एंड यू आर से फॉर एग्जांपल यू आर द डायरेक्टर ऑफ अनदर कंपनी, सो देयर इज ऑलवेज अ काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल फीलिंग कि ये सामने वाले ये मुझसे हायर पोजीशन पे, कहीं ना कहीं वो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमेशा होता है ह्यूमन बीइंग्स में. एंड देयर इज ऑलवेज अ सेंस ऑफ कंपैरिजन. क्यों? क्योंकि हम कंपेयर करने में बहुत, वी ऑलवेज लीड आवरसेल्फ, हम कंपेयर करना चाहते हैं. तो अगर ऐसी चीज होती है तो भी अगर आप हायर पोजीशन में हैं तो आप यू गेट द एडेड एडवांटेज. अगर आप लोअर पोजीशन में हैं तो भी तो आपको ये नहीं होना है कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करना है. rather you should educate yourself with this knowledge that you should not be under the influence of that designation which is higher than you. So yani then that means you are going to hold your position strong even when some of these factors like these are against you, in this case the position. Okay, ऐसे इस तरह के so apart from logic, इस तरह के जो influencing factors भी बहुत जरूरी है आपको ध्यान देना while you are negotiating. I'll quickly move. There are certain there are four key principles. अगर आपने ये 4 principle अपने day to day life में if you are trying to implement it, I'm telling you most of your negotiation hiccups are going to get removed easily. पहला, people. हमेशा मुद्दा क्या है उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय के जो मुद्दा लेके आ रहा है. हमारी टेंडेंसी क्या है, जो प्रॉब्लम लेके आ रहा है या जो डिमांड कर रहा है हम उसी के पीछे लग जाते हैं. इन द सेंस हम उसी को गलत समझने लगते हैं, उसी को हेट करने लग जाते हैं या इसी को प्रेशर में डालने की कोशिश करते हैं. हमें यह समझने की जरूरत है that the person is representing a company or a larger group of people, right? So this person, आप आदमी बुरा नहीं हो सकता. The issue is to be focused. The problem, वो problem कौन सा लेके आ रहे हैं, problem पे focus करो बजाय कि उस person पर से. So ये जो एक common sense है in terms of separating people from problem, it's the fundamental step one a good negotiator should begin with while sitting in negotiation. Majority case में ये चीज नहीं होता है, और right from the very beginning of the negotiation वो नेगेटिव नोट पे शुरू होता है, बहुत ही हीटेड आर्ग्यूमेंट में शुरू होता है, एक दूसरे को ऊपर नीचे मतलब इंसल्ट करने, एम्बैरस करने के स्टेटमेंट्स, उस तरह के स्टेटमेंट्स, कन्वर्सेशन शुरू हो जाते हैं. देन इट गोज बियॉन्ड योर कंट्रोल. तब फिर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग इट बैक. तो बहुत जरूरी है पीपल एंड प्रॉब्लम को सेपरेट करके चलना. और जहां भी पीपल वाली इंडिविजुअल बातें आती हैं, आइदर यू ऑफलोड इट or you point it out. Let's focus on the problem rather than the individual points which we are which we got digressed to. Second is interest. बहुत जरूरी है, फर्स्ट से भी ज्यादा जरूरी है. Interest is different from position. Position means आप जो भी डिमांड करना चाह रहे हो, what is that you are demanding? Okay, what is that? हर negotiator negotiation में कुछ ना कुछ डिमांड करने के लिए आता है. ये मुझे चाहिए, उनको सर्टेन कुछ चीज चाहिए आपसे. तो दोनों कुछ ना कुछ डिमांड. तो व्हाट इज द इज पोजीशन, व्हाट इज दैट आई वांट, व्हाट इज दैट यू वांट. जबकि नेगोशिएशन अगर आपको वाकई पॉजिटिव करना है, इंस्टेड ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट इज द डिमांड, यू आस्क व्हाई इज दिस डिमांड अकरिंग. इसका डीप रूटेड रीजन क्या है. कोई डिमांड कुछ कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, क्या वजह हो सकती है. कैन वी डिग डीपर इनटू इट, कैन वी आस्क सर्टेन क्वेश्चंस फर्दर टू हिम based on whatever he is demanding. Say for example, there was a conflict between two countries, between two groups of people in one of the Latin American countries some years back. और उसमें जो रूल कर रहे थे प्रेसिडेंट, और जो दूसरी पार्टी जो रिबेल्स थे उनका अपना गुट था, वो लड़ रहे थे पिछले 20 साल से. और लास्ट में नेगोशिएटर को बुलाया गया. नेगोशिएटर ने रिबेल के हेड से पूछा, आपको व्हाट इज द प्रॉब्लम. सो द रिबेल हेड सेड दैट वी वांट फ्रीडम. सो व्हाट मतलब फ्रीडम. एंड देन he took a moment and then said, why do you want freedom? And then suddenly he was taken aback, surprised. उन्होंने कभी सोचा नहीं कि इतना गहराई में उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मुझे क्यों फ्रीडम चाहिए या मेरे लोगों को क्यों फ्रीडम चाहिए.
Then after taking 5 or 10 minutes of thinking, he came up with a list of laundry list ki bhai mujhe, our females are not safe, our children are not getting food and proper education, we are insecure, our future is in dark. ऐसे कई सारी बातें उन्होंने बताई. तब उस negotiator ने president से बात की, बोला कि president, now that you have heard those reasons and why they are seeking freedom, instead of fighting further, can you fulfill these whys, all that whys? President बोले कि these are nothing a big demand, I can always fulfill this. अगर यही मुझे पहले पता होता तो हम लोग इतने 20 साल से लड़ नहीं रहे होते, इतनी जाने गई, इतने resources loss हुए. And this is a real scenario. मैं कोई hypothetical thing नहीं बता रहा. I think it's country is Peru और ऐसे ही कोई Latin American country है, right? So बहुत जरूरी है why को zero down करना, बजाय के just ये समझना कि आपको क्या चाहिए. Instead of what, why should be focused. Options means whenever you go for negotiation, हमेशा जिस तरह तर्कश में तीर ज्यादा होते हैं, उतनी ही ज्यादा आपके पास alternatives होनी चाहिए. यानी कि alternative 1 reject कर रहे हैं, दूसरा you offer the second alternative, third alternative, fourth alternative, fifth alternative, sixth, seventh, eighth. Can we have more alternatives? जितना ज्यादा होगा उतना strength आपका उस negotiation को successfully land कराने में होगा. क्योंकि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं है इस negotiation में, आपकी जिम्मेदारी सामने वाले को भी successfully land कराना है. आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि जब तक आप उनका cooperation आपको नहीं मिलेगा, ये negotiation कभी भी successfully land नहीं कर सकता. आप समझिए बात को. आप अकेले पायलट नहीं है, को पायलट है, ये एक ही प्लेन के. दोनों की रजामंदी जरूरी है इस नेगोशिएशन बेस्ड प्लेन को सक्सेसफुली लैंड कराने, राइट? सो ऑप्शन जितना होगा आपके पास, उतना ज्यादा आपका आउटकम म्यूचुअली एग्रीएबल होगा. और जितना ज्यादा म्यूचुअली एग्रीएबल होगा, उतना ज्यादा आपको वैल्यू जनरेट होगा आपके फेवर में, उनके फेवर में, दोनों के लिए. और देन इट वुड बी कॉल्ड मोर एज विन विन negotiation. This is also called, by the way, technically integrative negotiation. Technically इसको जहां विन विन होता है वहां उसको हम इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन कहते हैं. और जहां विन लूज है, मैं जीता आप हारे या आप जीते मैं हारा, तो उसको दो तरीके से बोलते हैं. या तो इसको कहते हैं जीरो सम गेम. जीरो सम यानी कि माई गेन इज योर लॉस, योर गेन इज माई लॉस. जब तक मैं लॉस में नहीं जाऊंगा आप नहीं जीतोगे, और जब तक मैं जीतूंगा नहीं, जब तक आप गेन में नहीं कहोगे, मुझे लॉस नहीं मिलेगा. तो ये जो एक इक्वेशन है, में ऐसा ही होता है. आप देखो आपके सराउंडिंग में, आपके फ्रेंड सर्कल में, कॉर्पोरेट में, कहीं भी आप काम कर रहे हैं, एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए मैनेजर, हमेशा वन साइडेड विन होता है अक्सर. क्योंकि हम सिर्फ एक ही डायमेंशन से सोचते हैं, विन लूज विन या लूज विन. इसका दूसरा, इसको टेक्निकली हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन. लेकिन जो मैंने इससे पहले बताया, इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन, व्हिच इज द मोर हेल्दियर वन and more constructive one and more lasting, sustaining one. Why? क्योंकि वहां पर आप you're ensuring win for both the parties. It is possible. अब उसके लिए there is a term called creating value. You don't just claim value, you rather create value. For whom? For the other party. Same is the approach for the other party to create value for you. When both of them are working mutually for each other, you are bound to generate integrative negotiation, bound to generate win-win solution for both. ऐसा एग्जाम्पल है बिटवीन कोडैक एंड IBM. When कोडैक जो कंपनी है जो अब लॉस में चली गई है, कुछ साल पहले जब उन्होंने आउटसोर्सिंग सोचा कि आप उनका डेटाबेस सारा वो IBM को आउटसोर्स कर देंगे, तो वो चाहते थे कि ये जो कोलैबोरेशन है ये काफी सालों तक जाना चाहिए, डिकेड्स तक जाना चाहिए. ऐसा नहीं कि 2 साल काम किया, then there is a rift and then they are separating. So Kodak really wanted this relationship to forward for negotiation deal. Kodak ने बोला very clearly, see, we want to outsource our database management to you. You do it for whatever number of years, but make sure we should not be fighting for things which are not which should hamper our own relationship for working together. जैसे तो उन्होंने क्या किया, they listed down the points which were let me show you that.
They listed out. I'll come to this. These are some of the examples. They listed down this one. They listed down the points. आप right hand side में देखो, deal issues. जितने भी deal issues हैं, ये jot down कर लिया. जितने भी relationship issues हो सकते हैं, वो भी Kodak में list down कर दिया. और Kodak ने IBM को कहा कि see, जो भी issues deal से related होंगे, हम उसमें कोशिश करेंगे कि जो भी right है, सही है, logical है, हम वो करेंगे. जिसको अगर झुकना पड़े तो हम करेंगे, जिसकी बात माननी पड़ेगी हम करेंगे, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा हम करेंगे, तमाम चीजें होंगी. लेकिन इसके बीच में आप रिलेशनशिप इश्यू को बीच में लेके नहीं आएंगे. Therefore, we will separate these two as two. Deal issues अलग हैं, relationship issues अलग हैं. So, and then they created this parallel list of issues which they called as relationship issues, and then they said that we are both going to agree on this point, that we will never ever drag the relationship issues, all of this, while we are sorting out deal issues. जब भी हम deal issues को solve करेंगे, हम relationship issues को कभी लेके नहीं आएंगे. With that kind of clarity and consent in the agreement, they signed the contract for 2 decades and more. Okay, so इस तरह से you can actually, so this is very much a win-win integrative negotiation, जो कि काफी राउंड के बाद इस लेवल पे पहुंची, जहां पर वो लोग, जैसे फॉर एग्जांपल मारुति और सुजुकी इतने सालों से काम कर रही है, कैसे पॉसिबल है? हाउ इज इट पॉसिबल? देयर कल्चर इज डिफरेंट, आवर कल्चर इज डिफरेंट, आवर स्टाइल, आवर लाइफस्टाइल, देयर प्रायोरिटी, आवर प्रायोरिटी, थिंग्स आर वेरी डिफरेंट. So it is only possible when you separate things in terms of deal issues and relationship issues and sort it out at regular period of time and mention it in the contract also, so that there is less of ambiguity and more of clarity towards mutual cooperation and collaboration. So I'll quickly, I know the time is going to be over. मैं आपको कुछ important चीज, and last point जो है criteria, लास्ट ये इसमें लिखा हुआ लास्ट है, लेकिन सबसे पहले ये करना चाहिए, वो क्या, कि किसी भी गेम में उतरने से पहले आपको रूल ऑफ द गेम पता होना चाहिए. राइट? फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई भी गेम में जाना चाह रहे हैं, आपको रूल पता होना चाहिए. बिना रूल के तो आप कभी नहीं जाएंगे और नहीं जाना चाहिए. इन द सेम वे, कैन वी टेल द नेगोशिएटर, आपका जो ओपोजिशन में जो बैठे हैं, उनको आप ये क्या कह सकते हैं कि क्या हम हमारे इस क्राइटेरिया का मतलब एजेंडा, ये हमारा एजेंडा है, ये इश्यूज हम इसमें लेंगे, ये इश्यूज नहीं लेंगे, और इश्यूज को प्रायोरिटाइज भी करके आप सामने वाले के सामने रख रहे हैं, एंड देन यू आर विनिंग हिज कॉन्फिडेंस. ओके, एन एग्रीमेंट दैट वी विल फॉलो दिस, एंड देन जो भी बचेगा वी विल टेक इट अप इन द नेक्स्ट. विद दैट काइंड ऑफ फ्रेमवर्क एंड अंडरस्टैंडिंग, अगर आप नेगोशिएशन में उतरते हो तो क्या होगा, 70% चांसेस से भी ज्यादा है कि कम से कम सडन सरप्राइजेस और डिसएग्रीमेंट्स होंगे जब आप नेगोशिएशन कर रहे होगे. क्या होता है कि जब आप नेगोशिएटिंग कर रहे हो, पॉइंट्स आप एक्सप्लेन कर रहे हो या अपनी बात रख रहे हो, तो सडनली सामने वाला कहीं और टॉपिक पे ले जाएंगे या किसी और इश्यू पे बात करने लगेंगे अपने जस्टिफिकेशन के लिए. तो क्या होगा कि मुद्दे से आप हॉप कर रहे हो, एक इश्यू को सॉल्व करने जा रहे हो, इतने में वो दूसरे मुद्दे में चले गए, फिर आप उस इश्यूज को सॉल्व करने जा रहे हैं, फिर वो तीसरे में चले गए. तो आपका जो एक लिमिटेड टाइम है, 40 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर, जो भी नेगोशिएशन का है, वो तो ऐसे ही चला जाएगा. देन इट इज ऑफ नो यूज. नेगोशिएशन कहीं नहीं पहुंचा. सेकंड राउंड में भी वही होगा, थर्ड में भी वही होगा, फाइनली नतीजा क्या निकला? नेगोशिएशन फेल. तो ये बहुत जरूरी है, क्राइटेरिया हमेशा सेट करके चले. अगर आपने ये 4 फॉलो कर लिया फंडामेंटली बेसिक लेवल पे, ABCD लेवल पे, तो आपके 80 to 90% नेगोशिएशन जो आप पर्सनल लाइफ में करते हो, प्रोफेशनल लाइफ में करते हो, एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स के साथ, VCs के साथ करते हो, सप्लायर्स के साथ करते हो, इन्वेस्टर्स के किसी के साथ भी करते हो, these are the fundamental role building blocks of any negotiation by Fisher and Urey 1981. How much time do we have, Dr. Preeti? Yeah, I am stopped.